Hi guys, welcome to this video. This is a special video that I'm bringing out for you guys, and today is a special day. We've got 100 days for CAT 2023, 100 preparation days, 100 prep days, and for that we are bringing out a special series especially for you guys. This is Prashant. I'm the founder of Word Pandit, and I'll be running this series on YouTube for you guys. We'll be covering everything related to VARC. We'll be covering a lot of things. There are a lot of new features which are getting added to Word Pandit as well as our YouTube channel. So gradually over the course of the next 100 days, each of these is going to be revealed, and I hope you guys join us in our journey, right? So that would be a terrific thing if you guys can join us, collaborate with us, and learn from us, right? That's the most important thing. Here, collaboration is not in the sense of collaboration. I just want you to collaborate as a learner. That is all I want you guys to do. So let's get started. What is it? What is in store today? The first thing that we are going to talk about, what is the Guru Mantra for VARC prep? Now this is going to sound a little weird. What do I mean by trust the process? This is almost like a MS Dhoni type of mantra, right? So MS Dhoni always talks about trust the process. So all cricket fans out there, you will probably understand this a little better. What is this process and why should you trust it? Let's try to understand this a little bit. Simple है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? अपने लिए मुश्किल नहीं बनाना, but process को commitment दिखाना बहुत ज़रूरी है. It is super crucial to be committed to the process. Process क्या है? What is the process? Very simply, the process is you read, you analyze, you practice and you repeat. Simple process है. तुम्हें क्या करना है? हर रोज डेली बेसिस पे you have to read your set of articles, you have to analyze them, you have to practice your set of RCs, your VA questions, and you have to analyze your mistakes and you have to repeat them. सर इसमें तो आपने कोई रॉकेट साइंस हमें नहीं बताया, ये तो कॉमन सेंस है. आपने क्या बताया? यू आर काइंड ऑफ वेस्टिंग अ टाइम. नहीं, ये फीलिंग नहीं आता तुम्हें, ठीक है? बट ध्यान से सोचो एक्चुअली क्या होता है VARC में. दिस इज अ थिंग विच हैपेंस विद ईच वन ऑफ अस. Our scores fluctuate, right, on a week basis. On our section test mocks, this is the average graph of a VARC student, or at times it keeps going up, then it plummets down, then it goes up again. So you've got all these kinds of fluctuations. At times, the most depressing graph is this one. It is just headed in one direction, right? So or on other occasions, you've been doing well for like 5 or 6 tests, and then it plummets down. So this inconsistency of scores, ये जो ऊपर नीचे हो रहे हैं scores, right, ये काफी ज्यादा तंग करते हैं हमें. इसका solution क्या है और ये problem कहाँ पे लाई करती है? Fact of the matter remains, अगर तुम्हारा आज एक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आया, let's suppose you take a mock test today and your score is pretty terrible in it. कल क्या करोगे? What will you do tomorrow? Tomorrow you will read your daily set of articles, you will analyze them, increase your knowledge base, practice RCs and analyze them, practice your VA questions and analyze them, take your section test or mock and repeat the process again. ठीक है? अगर स्कोर अच्छा नहीं आया, अब दूसरा सिचुएशन है, दो ही आउटकम्स पॉसिबल है. स्कोर अच्छा आया या बुरा आया, राइट? अच्छा बुरा तुम्हारे एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है. अगर तुम्हारे लेवल एक्सेप्टेंस लेवल के हिसाब से स्कोर अच्छा नहीं आया तो कल तुम क्या करोगे? यू विल रीड, you will analyze, you will practice and analyze and you will repeat. Score अच्छा आया तो कल तुम क्या करोगे? Read, analyze, practice and analyze and repeat. The process is independent of the results. So when I say trust the process, the thing that you've got to really convince yourself to do is, irrespective of the results, my process is not going to change. So you can't stop solving RCs, you can't stop reading. These are two things that we do. हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम पता क्या सोचते हैं, यार इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रहा, मैं क्यों करूँ, राइट? काफ़ी लोग ये भी सोचेंगे, ये गंजा तो कुछ भी बोलता रहता है, ठीक है? बोलता रहता है, हर बार यही सेम चीज़ें बोलता रहता है, हमारी तो इम्प्रूवमेंट हो नहीं रही, तो हम क्या करें, राइट? सो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी है. Process is independent of you. Process is not dependent on any one particular student or individual. Independent of you, you've got to stick to it. You've got to keep doing it. The process is independent of results. ये टैगलाइन बना लो अपनी. VARC में हर रोज करना है, ठीक है? हर रोज सेम चीज करनी है. और तुम लोगों को हेल्प करने के लिए आई एम ब्रिंगिंग आउट अ स्पेशल फ्री कोर्स वेयर आई विल बी क्रिएटिंग वन डेली RC. ये हमारे कोर्स प्लेटफॉर्म जो कि है learn.wordpandit.com, राइट? इस पे अवेलेबल है.
राइट. सो ये आज से ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे. यू विल हैव वन डेली आरसी. दिस इज अ फ्रेश आरसी दैट आई एम क्रिएटिंग फ्रॉम 2023 कंटेंट. एक डेली आर्टिकल नोट मेकिंग वीडियो. इसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा पढ़ते कैसे हैं, हाउ डू यू रीड, थर्ड क्वेश्चन अ डे एंड वर्ड ऑफ द डे वीडियोस. थोड़ी थोड़ी वोकैब साथ साथ करते रहेंगे और एक एक क्वेश्चन भी करते रहेंगे. वीआरसी के ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट वीडियोस होंगे और साथ साथ तुम्हारे को प्रीवियस ईयर कैट के वीआरसी पेपर्स होंगे, टिप्स होंगी जीडीपीआई और वैट के लिए, राइट. सो एक एग्जॉस्टिव फ्री कोर्स है. सो तुम में से जिन लोगों ने कोर्सेज ले लिए हैं, यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर कोर्सेज, यू डन व्हाट यू वांटेड टू डू, और आप समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, अभी भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, इस फ्री कोर्स को सब्सक्राइब करो एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दिस फ्री कोर्स. सो दैट इज समथिंग दैट यू गॉट टू डू. 2023 फ्री कोर्स में बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है, बहुत सारी चीज़ें करनी है. सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना. डू गेट एडेड टू द कोर्स डैशबोर्ड, डू सब्सक्राइब absolutely free of cost and start learning. As always, I'll end this video on the note that I end all my videos on. It's not only important to learn, but it's also important to learn in a happy manner, right? So happy learning, that is the most important thing. Have a smiling face like this bald fellow has in this video. So that is, I'm referring to myself in this mode, right? So I hope you guys loved watching this video. Do subscribe to us, do share this content, and anyone who's going to find value in this content, please share this content with them. Thank you very much for watching this video, and as always, happy learning.